Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now, my dear fellows and students and all doctors who are appearing in any examination locally or foreign examinations, especially talking about the foreign examinations. Actually, we are dealing with the spirochetes. Different type of genesis has already been described. And many of these spirocheted diseases are zoonotic diseases, means it is vector-borne diseases. They are vector-borne diseases and they do occur in your country, but they are missed by many of us. This is the problem. Because of the lack of the or poor poverty of the history taking and clinical examination, and the lack of the investigations. That's why we are missing these diagnoses. Second point, that these spirochetal diseases, if you minus only one, that is Treponema pallidum, that is syphilis, all other diseases, they are difficult to diagnose. Thirdly, the thing is this, that these diseases usually occur in camps or in those places where a lot of people are living in one area, cordon of area. So, in cases of the Orphan Institute or in cases of the jails, big jails, and for a prolonged period of time they are living in one place. And in the cordon of areas, usually we see these diseases in these areas, in these circumstances. At one time when there is an influx of the Afghan Muhajireens and they camped very near to the Peshawar, around Peshawar, and there was a fever which was very atypical type of a fever which was hovering here and there in the different camps, and experts after many days they diagnosed that this is what is called as the epidemic typhus. It was diagnosed by different means. WHO team arrived here and they diagnosed it because your tools of diagnosis are poor. So they managed these cases and the disease was eradicated. I am Professor S.D. Haider. I am an honorary global professor of medicine without any name or fame or economics. One group of fever are called relapsing fevers. This is a specific type of the entity. Now what is this? Relapse means one bout of the fever, they're coming in the bouts. So one bout of the fever take its own time, let's say for 7 days, 10 days, and there is a big gap afterwards. 2 weeks, 3 weeks is possibly more than that. Depends upon the genus which is involved, the spirochete genus which is involved in this. So this is called the relapsing fevers. Because intermittent fevers and other type of the fevers, what are the type of the fevers? A group relapsing fevers are described. Description is that a group of the acute infections caused by arthropod-borne spirochetes of the genus Borrelia and characterized by the recurrent cycles, bouts of the febrile episodes, separated by asymptomatic intervals of
apparent recovery. After the apparent recovery, the patient was actually not in compliance, and the patient arrived after 2 weeks, 3 weeks afterwards, again the same type of the fever. Again there is a period, honeymoon period. Honeymoon period means there is no specific symptoms, and then again this cycle is going on and on. And this is the cycle which is described on the graph paper. This is the normal one, this is the escalating, again very near to the normal, and then again it will going up and up, high grade fever, and lower down, and then up and up and up, and then lower down to here, and then up and down for the period. This is the period, time period, weeks. After 3 or 4 weeks recurrent, again it will be gradually mounting up and then going down, and again there is a period, a big gap, about 8 weeks or more than that. These are the type of the fevers that are called relapsing fevers. You cannot classify intermittent. Intermittent fever means that the fever occurs but it will touch to the normal. You cannot describe this fever as recurrent fever. Remittent fever. Now remittent fever will not touch the normal. Here it touches the normal, in you can see. So it cannot be classified under the remittent fever. So these are the group of the fever that is called relapsing fevers. One type of the fever which I know that it was described as the neutropenic fever, always occur after 3 weeks, always, cycles. The etiology of the neutropenic fever is not known. It's possibly that the transient antibodies are formed and they reduce the neutrophil count to the 30% or less than that, and the fever occurs, that's why. And then again the jump occurs. The patient will be fine after 1 to 2 days or 3 days, and there is a give back 3 weeks gap, again there is a neutropenia and the fever. It is called neutropenic fever. It is again the type of the relapsation of the fever, the relapsing nature of the fever. Variants of fever are continuous fever. You know that it will not vary, hardly 1 degree Fahrenheit in 24 hours. Rapid fever will not touch to the normal, and fluctuation will be more than 1 degree. Intermittent fever touches normal during the day. Intermittent fever may be many types, as you know that it may be subtertian, it may be quotidian fever, it may be subtertian, tertian fever, it may be quaternary fever, etc. Relapsing I have already described. And another fever which is called Pal-Epstein type of the fever. We see that this is again the relapsing type of a fever, but with the bouts of the fever lasting 3 to 10 days, and is seen in classical Hodgkin disease. One fever is called inverted fever. In this type, the highest range of the temperature is recorded in the morning, early morning hours, and the lowest in the evening, which is contrary to that found in the normal course of the fever. This is called invert fever or inverse fever. It's seen in the cases of some of the mycobacterial diseases. Patterns change. So I have actually, this is revision, I have already discussed it in one video which I have made about the fever. In a very detailed account has been given. So relapsing fevers are the group of the fever. If you said relapsing group of fever, means that you are talking about some specific group of fever.
Now, relapsing fever are concerned, they are caused by the Borrelia diseases, because this is a genus which is involved. It is the PUO, pyroxia of unknown origin, in most of the cases. Improved standards of living in the better sanitary condition have almost completely controlled the louse-borne relapsing fever. However, the sporadic cases of tick-borne relapsing fever are still seen. Its true incidence is more than the reported one, and the diagnosis can only be established if the condition is kept in mind. यानी आपके दिमाग में होगा तो फिर आप डायग्नोस करोगे ना, जब होगा ही नहीं तो कैसे डायग्नोसिस करोगे, ये बात होती है. तो इन मेडिसिन एवरीथिंग इज पॉसिबल. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, unlikely diagnosis, uncommon diagnosis, and then rare diagnosis. This is called the differential diagnosis pattern. ऐसा इसी को जो है ना कोई अपने दिमाग में रखते ही नहीं है. लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, इंटरनेस्ट होते हैं और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो कभी भी जो है ना किसी भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को 100% जो है ना माइनस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रूव ना कर दे, अनलेस प्रूव अदरवाइज. इसलिए ट्यूबरकुलोसिस इज द डायग्नोसिस ऑफ एवरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस. HIV is the differential of every diagnosis, every, because it is a multi-system involvement. Autoimmune diseases again, for example SLE, you cannot rule it out until and unless proved otherwise. And the same one as the chronic liver diseases, a group of chronic liver diseases which will involve whole body. Chronic renal failure, which involving the most part of the body. So these are the actually diseases, CRF or diabetes mellitus, for example. जो अच्छे जो है ना FCPS पार्ट 2 के कैंडिडेट हैं, जो लॉन्ग केसेस असल में उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम में होता है. Doing the long cases in cases of the Pakistan is concerned, or long cases you are if you are going to Ireland and where the same pattern of the examination. Again, this is a problem which is going on. If you have the patient with CRF, that is definitely you will be passing this examination, because everything is possible. Diabetes, tuberculosis, etc. So the differential आपके जहन में होगी, if you are in mind that this may be possibility, although it is least possibility or rarest possibility, but it should be kept in the mind. हमारे जो है ना उस्ताद हैं, यानी क्लिनिकल टीचर, जो डाउ यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर भी रहे, मसूद हमीद खान, उनमें जो है ना आम आदमी के सेंसस से ज़्यादा सेंसस थे. हम उनसे मैं कहते था, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ. मैंने कहा जी 5 ही सेंस होते हैं, ये आप में 6 भी है, 7वां भी है. वो इसलिए उन्होंने कहा मुझसे कि मैं शक की बुनियाद पे मरीज देखता हूँ, मुझे शक होता है कि ये पॉसिबिलिटीज भी हैं, तो इसलिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ. तो 6 तो 7 सेंसेस इस्तेमाल कर, इसको कहते हैं इस्तेमाल, मेडिकल नॉलेज को इस्तेमाल करना इसको कहते हैं. So our background is the relapsing fever is a vector-borne disease caused by the infection with a certain bacteria, genus Borrelia. It may be bites of the lice or soft body ticks, soft ticks. Genus is Ornithodorus. The signs and symptoms: most people who are infected develop sickness between 5 and 15 days after they are bitten, and the symptoms may include a sudden fever, chills, headaches, muscle or joint aches, and nausea. A rash may occur transient rash. These symptoms usually continue for 2 to 9 days, and then they disappear. Whether you are interrupting with the antibiotics, drugs, whether you are period short हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा. अदरवाइज ये कि वो अपनी नेचुरल
उसकी जो लाइफ है वो पूरी करेगा। वो दिस साइकिल में कंटिन्यू फॉर सेवरल वीक्स द पेशेंट इज नॉट ट्रीटेड, दैट इज द रिलैक्सेशन। द लॉस बोर्न रिलैप्सिंग फीवर and the tick-borne relapsing fever. Now, louse-borne relapsing fever is Rickettsia proboscis, and it may be Bartonella cornata, depending upon the geographical area. Borrelia recurrentis is one of 3 pathogens which the body louse. Louse जो है ना, ये जुएं हैं जो जिस्म के ऊपर होती हैं. Particulars humanus. The vector louse-borne relapsing fever is more severe than the tick-borne variety. The louse-borne relapsing fever occurs in epidemics and poor living condition, famine, and the war in the developing world. It is currently prevalent in Ethiopia and Sudan. एक और बात याद है, ये खटमल जो होता है, ठीक है ना, बग जो होते हैं वो भी ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब इस पर तो रिसर्च नहीं की गई है, लेकिन मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ। तो बॉडी लाउस मैंने इतनी देखी नहीं है, लेकिन मैंने जो है ना वो बाकायदा हटाई हैं लोगों से जिनको आप कहते हैं खटमल इन आवर कंट्री, उससे ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज, ये पॉसिबिलिटी है। द मोर्टेलिटी रेट इज 1% विद ट्रीटमेंट ऑफ 30 to 70% विदाउट ट्रीटमेंट। विदाउट ट्रीटमेंट इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट इसका करेक्ट टाइम पे हो तो 1% से कम है। पुअर प्रोग्नोस्टिक साइंस इंक्लूड सिवियर जॉन्डिस। In jaundice, it is maybe possibility that it is the nature of the autoimmune type of jaundice, the hemolytic jaundice. Severe change in the mental status, severe bleeding, and a prolonged QTC, QT interval on ECG. Because ये कि ये मायोकार्डियम को इन्वॉल्व करेगा और कंडक्टिव सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। Lice that feed on the infected human require the Borrelia organisms, that then multiply in the gut of the louse. When an infected louse feeds of an uninfected human, the organism again access. When the victim crushes the louse or scratches the area where the louse is feeding, the Borrelia recurrentis infects the person via mucous membranes and then invades the bloodstream. The only one is the Borrelia recurrentis. Mucous membrane के थ्रू भी ये जा सकता है। Non-human animal reservoir exist. इसमें जो है इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है कोई भी, डायरेक्टली है ये। आपने लाउस को, या मैंने कहा कि बेड बग्स जो कहलाते हैं उनके जरिए भी ये डिजीज हो सकती है पॉसिबल, तो उसके जरिए आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये बॉडी लाउस है, मैंने तो नहीं देखी, ये बहुत कम मेरे ख्याल में देखी है। अब इसको चीचड़ी बिचड़ी ये पता नहीं क्या कहते हैं ये लोग, मुझे नहीं मालूम। हम तो जुएं कहते थे, सर की जुएं हैं, जिस्म की जुएं हैं, और प्यूबिक लाउस भी होता है जो अराउंड जो है ना पेरिनियम में होता है, वो वहाँ पे जो है ना वहाँ बड़ा तंग कर रहा होता है। और ज़्यादा पेरिनियम डिजीज में सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ है वो टीनिया क्रूरस है, फंगल इन्फेक्शन। लेकिन ये जो है ना, अगर खुद एग्जामिन करें, भाई पेरिनियल एरिया कौन चेक करवाएगा? आप किसी को चेक करके देखें, दोबारा आएगा ही नहीं वो, अनलेस कि आप एतमाद में लें, उसको कॉन्फिडेंस में लें और फिर एग्जामिन करके देखें तो आपको ये मिल जाए। अगर मिल गया है वहाँ पे तो प्यूबिक लाउस कहते हैं उसको, उससे जो ट्रांसमिशन इतना कॉमन नहीं है। अब ये पेशेंट जिसकी डिस्क्रिप्शन हो रही है कि सिवियरिटी है कि इसका जो बोरेलिया रिकरेंटस है या दूसरे जीनस के फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने इन्वॉल्व किया ब्लड में, तो इसमें बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, पाइमिया एंड सिर्स, और उसके बाद आगे आप चले जाएं तो कि वो सेप्टिसीमिया, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम एक्सेट्रा। वो साइकिल जो है ना वो इन्फ्लेमेटरी पाथवे की, अगर उसमें चला जाएगा इवन DIC तक हो सकता है पेशेंट। अब ये इसमें QT इंटरवल समझाया है, ये होता क्या है। इसको पहले नापते हैं Q, ये देखें Q वेव है, ये पूरी T जो एंड हो गई है, जहाँ T एंड होती है वहाँ तक इसको नापते हैं। यूजुअली जो होता है हमारे मुल्क में ये होता है
हाई लेवल जो 0.42 0.44 होता है, लेकिन ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द हार्ट रेट। तो आप जो है ना उस पर जाएँ गूगल पे और इसको लिखें कि QTC काउंटर, तो काउंटर वो निकालेगा, वो आपसे पूछेगा हार्ट रेट कितना है और आपने जो कैलकुलेटेड QT इंटरवल कितना है। जब वो आपको मिल जाता है तो एग्जैक्ट रेट आपको QT इंटरवल मिलता है। तो प्रोलॉन्ग QT इंटरवल इज डेंजरस बिकॉज इट विल कॉज very dangerous type of the ventricular dysarrhythmia. Tick-borne relapsing fever, ticks are found in Spain and Saudi Arabia, nearby in Afghanistan, etc., and the United States. अब ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग बुरेलिया हैं, ये बुरेलिया हैं। तो बुरेलिया के नाम लिखे हुए हैं, बुरेलिया लिखा हुआ है कॉसिटी और ये कहाँ पे होता है, और इसी तरीके से दूसरे बुरेलिया लिखे हैं, डिटॉनी है मिसाल के तौर पे, हमदल है और बुरेलिया हिस्पैनिया है। हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने काम ही नहीं किया है, वरना हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करते तो वो जो बुरेलिया पकड़ेंगे तो वो फैमिली जो है शायद इनमें से ना हो, तो बुरेलिया जो है वो पेशावर ही हो जाएगा या बुरेलिया जो है फला हो जाएगा। या अगर आप दरियाफ्त करते हैं, आप वाहिद आदमी हैं, आपने दरियाफ्त किया, साइंटिस्ट हैं, तो अपने नाम पे इसको रखें। बुरेलिया मिसाल के तौर पर अफजाली, बुरेलिया हैदरी, इस तरह से भी रख सकते हैं। लेकिन काम करेंगे तो फिर ही आप लोगों को बातें करेंगे, अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते ना। बुरेलिया जो हमजिल और जो रिकरेंटिस हैं, सिमिलर डिजीज़ हैं, ये अक्सर मिलती जुलती डिजीज़ हैं, बस खाली ये है कि सीवियर डिजीज़ है जो रिकरेंटिस की डिजीज़ है। और इसके अलावा जो दूसरे एंजाई की जो दूसरा इसका फैमिली मेम्बर है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्गर है, तो उसका रिलैप्सेशन भी लॉन्गर है, लेकिन रिकरेंटिस का जो है वो स्मॉल है उसके मुकाबले में। कई महीनों के बाद फीवर आया है लोगों, अब वैसे अंदाज़ा लगाना, 3 महीने तक कोई फीवर नहीं आया, 3 महीने बाद फिर आ गया। ये है वो टिक यूज को जो कहते हैं, नाम लेते हैं ये इसका टिक्स। तो हम जो है ना ये एनिमल क्योंकि से इसका रिलेशन है बहुत ज़बरदस्त, कि उनके ऊपर चिमटी भी होती है, मिसाल को माइस है, मुझसे उड़ के जो है ना आपको काटती है, ये इसमें दिखाया गया है। Now, the diagnosis of the relapsing fever can be made on the blood smear as evidenced by the presence of spirochetes. Direct examination is needed. Other spirochetes disease, Lyme disease, syphilis, leptospirosis do not show spirochetes on blood smear. डायरेक्ट एविडेंस उनका इतना आसान नहीं, इसको आपको बाकायदा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्मेयर बना के देखना होगा, जैसे कि आप मलेरिया पैरासाइट के नहीं देखते। Although considered the gold standard, this method lacks sensitivity and has been replaced by the PCR, specific PCR in many settings. Costly है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए आपको अलग अलग जोन में अलग अलग PCR बनाने पड़ेंगे। ये फैमिली में तो अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ अगर मेहनत करते तो इसके इंटीजियस कंपोनेंट के लिहाज से PCR बना लेते, तो आप PCR बना के और उसको डायग्नोसिस बनाते। लेकिन आपके पास तो ज़ाहिर बात है वो है ही नहीं, लैक ऑफ रिसर्च का मसला ही नहीं है, यहाँ तो कोई कंसेप्ट नहीं है। मैनेजमेंट इसके बहुत आसान है, एंटीबायोटिक्स देनी है, वही एंटीबायोटिक्स हैं जो पहले थी। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन है, इसके बाद मैक्रोलाइड्स आ जाती हैं, वही ग्रुप सेम ग्रुप इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोगों ने जो है ना इसमें सल्फा को भी ट्राई किया है, अच्छा तो नहीं आया रिजल्ट, लेकिन बहरहाल कहने का ये टेट्रासाइक्लिन जो होती है बहुत तेज़ी के साथ बड़ी स्पेसिफिक ड्रग है, और बहुत क्योंकि ज़्यादा तेज़ी के साथ इट ब्रेक करती है, लाखों की तादाद में जो है ना ये बुरेलिया को मार देती है। उससे जो रिएक्शन प्रोड्यूस होता है वो क्या रहता है, जेरेक्स रिएक्शन। वो क्या चीज़ है, दवाई देने से बीमारी बढ़ गई, मरीज तो यही बोलेगा ना, एंजाइटी, डायफरोसिस, फीवर, टैकीकार्डिया, टैकेपनिया विद इनिशियल प्रेशर रिस्पॉन्स फॉलोड बाय अचानक हाइपरटेंशन में चल जाएगा।
वो आपके ऊपर डाल देगा ना जी आपने गलत दवाई दे दी, और गलत दवाई नहीं दी है, वो उसका किलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से एक जेरिक एक्जिमा रिएक्शन हो गया। अब आप इसका मतलब ये ड्रग बहुत ज़बरदस्त काम कर गई है अपना। जब आपने इसको 5 to 7 days 10 days दे दिया तो ये इरेडिकेट कर देगी, बीमारी को ही निकाल के फेंक देगी। अब रिसेंट स्टडी में मैंने बताया कि TNF फैक्टर अल्फा में भी पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर जेरिक एक्जिमा रिएक्शन। देखिए ये किसी में भी हो सकता है। फेलेरेसिस के अंदर ये पकड़ा था पहली मरतबा, फिर इन्होंने जो है ना स्पायरोकीटल डिजीज़ की ट्रीटमेंट में भी इसको पकड़ा। किलिंग अगर आपका तादाद ज़्यादा किल हो जाए उसमें ये रिएक्शन होता है सर। ड्रग स्पेसिफिक है, यानी बनाई इसी के लिए गई इन डिजीज़ के लिए, तो इसलिए जो है ना वो किलिंग इफेक्ट की वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। आई होप दैट ये जो है शॉर्ट डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता था कि रिलैप्सिंग फीवर्स अगर कोई कहे तो इसके मायने हैं तो लॉस बोन या टिक बोन फीवर्स, जो कि नापैद है यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन जहन में रखने पड़ेंगे। आप पूछते हैं ना हिस्ट्री टेकिंग वगैरह में, आप पूछते हैं नहीं सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन में कि आपने घर में जानवर पाले हुए, या आप पूछ रहे होते हैं जब उसको स्टार्टिंग पॉइंट में आप रहते कहाँ पे हैं, कहाँ से आए हैं। उसने कहा जी मैं कैंप में रहता हूँ, अफगान कैंप में। तो आपका दिमाग उधर चला जाना चाहिए, या तो ये रिकेट्सियल है या बोरेलिया वगैरह डिजीज, तो नहीं ऐसा हो सकता है कि ये रिकेट्सियल हो या बोरेलिया हो। आई होप कि ये जो है ना थोड़ी सी नॉलेज आपके लिए सूदमंद होगी, बेनिफिशियल होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।